Hello. Yes, sir. Assalamu alaikum, everyone. How are you? Am I clear? Well, yes, sir. All right. Great. Great. Thank you. Let's just wait for a couple of more minutes so that other people can join and then we start. Okay. Yes, sir. Yes, Farah, we certainly will do that. Uh, असल में कल जो हमने कुछ डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लिटरेचर रिव्यू इज़ जस्ट नॉट अ फॉर्मेलिटी फॉर द रिसर्च
Rather, it is foundation of your research. We gave an example or analogy. We used an analogy for building a house. तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस होगा और फाउंडेशन होगी किसी भी घर की, किसी भी बिल्डिंग की, तो उतना ज़्यादा वो फिर सस्टेनेबल हाउस होगा। मैंने फिर एग्जांपल दी थी कि अगर आपने कभी रेत से घर बनाया है तो उसको, मेरी आवाज़ आ रही है फरा? यस सर, आवाज आ रही है लेकिन बहुत लाइट आ रही है। ओके ओके ओके, आई ट्राई टू कीप इट दिस वे। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, सो वी डिस्कस्ड लिटरेचर रिव्यू एंड उसके बारे में हमने, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यूज़ की थी, एक एनालॉजी यूज़ की थी, दैट इज़ कि बिल्डिंग हैविंग अ strong literature review is the foundation of your, you know, research, and having stronger, the stronger the literature review, stronger the study is, and sustainable the study is, credible the study is. And I used the example of a sand house or sand castle. If you have ever experienced कि आपने अगर कभी रेत से घर बनाया है तो आपने देखा होगा कि उसको थोड़ा सा भी पानी लगता है या किसी मतलब थोड़ी सी भी उसके साथ हम कह लें कि उसको थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो वो गिर जाता है, राइट? सो बिकॉज इट द सैंड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एट द सीमेंट इज और ब्रिक्स आर, राइट? तो इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि सिमिलरली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा लिटरेचर रिव्यू होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो रिसर्च है वो क्रेडिबल होगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके अलावा हमने लिटरेचर रिव्यू के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था नैरेटिव रिव्यू विच इज़ स्टोरी टेलिंग, कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हो। और उसके अलावा हमने दूसरा डिस्कस किया था स्कोपिंग रिव्यू। स्कोपिंग रिव्यू इज़ बर्ड आई व्यू ऑफ you know a set of knowledge about certain topic or subject। उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी हो चुका हुआ है, क्या क्या लोगों ने रिसर्च की हुई है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा अ, हमने और डिस्कस किया था इसके अंदर जी, एक मिनट में ज़रा कॉपी करके लिंक भेज दूं, बिकॉज आई थिंक पीपल माइट हैव ज्वाइंट द अदर लिंक। तो मैं ये दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। Because मुझे लग रहा है कि पीपल हैव स्टार्टेड विद सम अदर लिंक, एंड वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं। प्लीज। All right, I think we have a message. Sir, kindly make sure the recording. Yes, today I have made sure that we are recording, and as you join, you might have heard कि recording is in process. So recording हो रही है हमारी. All right. So वी वर ऑन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में हमने डिस्कस किया था दैट इज़, अच्छा, नैरेटिव रिव्यू जो है वो इट इज़ काइंड ऑफ कैजुअल रिव्यू, जिसके अंदर वी जस्ट प्रोवाइड द हिस्टोरिकल, यू नो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ a particular topic in a historical story form, right? Just like storytelling. And in systematic literature review, it is more structured, and systematic literature review has certain kind of inclusion and exclusion criteria, whereby we decide that which studies should be included in our literature review and which studies or research papers we exclude uh, from our review, because obviously we cannot add all the studies. So that's the reason that we create a inclusion and exclusion criteria. This criteria actually ensures the credibility of your
literature review, that you have certain kind of criteria on the basis of which you have the evidence, that you have this evidence. On the basis of this evidence you chose the particular study, and you chose it because of its credibility and quality and uh, whatever the criteria you have built, right? So that's what we discussed about systematic literature review. Then we discussed the meta-analysis. Now, in systematic literature review, we collect the couple of, or bunch of research papers, and then we include use inclusion and exclusion criteria, and then we have certain number of research papers or research articles or studies in a way that are finalized. And then we qualitatively do the thematic analysis. We draw themes and patrons. We identify themes and patrons in in these studies of like about findings. Okay, what findings these papers have produced, right? So these are qualitative kind of, because हम qualitative analysis कर रहे होते हैं इन papers की, just like interviews मैंने example दिया था, right? और उसके बाद we discussed meta analysis. Meta analysis is just like systematic literature review but in quantitative form. Systematic literature review is in qualitative form because we do thematic analysis of the findings of studies that we have selected for our review. In meta analysis we basically choose quantitative studies, and then on the basis of these quantitative studies we collect the data of all these. We kind of combine the data of all these quantitative studies, and then we kind of do the overall analysis, the quantitative analysis, and we try to uh, produce the evidences which are qualitative in nature, right? So that's what we discussed in yesterday's class, right? Let me just share the today's PPTs and we will start. Clear? Just give me a moment. Okay, saved. Sharing it with you people in Microsoft, and we will choose set business. Set business. Yeah, bhai. Okay, guys, I have just shared the PPTs of today's session in your group. Let's just get it uploaded and we will be done. Okay, it's uploading. ओके अच्छा, जहाँ पे मेरी आवाज़ स्लो हो जाए ना, तो जस्ट गिव मी प्रॉम्प्ट कि सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है. क्लियर? ओके, वी हैव 3 मैसेजेस. जब तक ये अपलोड हो जाए, सर इफ़ पॉसिबल इफ़ यू विल गिव द ओवरव्यू ऑफ यस्टरडेज क्लास. सॉरी सर, इट्स ओके. फरा, वी जस्ट हैव. वालेकुम अस्सलाम abda, thank you. Please share the screen. Yes, Ghulam Mustafa, I'm about to share the screen. Okay, uh, just let me do this. Essentials of literature review, open, and we will be ready to share. Mm, okay, it's opening. 80%, 87. Okay, opening in a moment, processing. Great. We are done here. Okay, now
share screen, and we will be doing this today. Okay. I hope my screen is visible to everyone. Guys, can you see my screen? Okay. Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Yes, Zakir, thank you so much. We all are good. Thank you. Thank you. Thank you, Mustafa. Thank you, Naya. Great. So, as we just gave the recap of yesterday's session, uh, what we discussed in yesterday's session, today we will be discussing something more. We will be discussing the database databases. What are databases in research, or where we can find just इसका मैं ये ना चेंज कर दूँ सेक्शन हेडर, इसको अगर सेक्शन हेडर बना दें एंड इसको इस तरीके से कर लें. ग्रेट. डेटा bases to find research papers. All right. So my voice is still clear. Anybody? Just give me a prompt. A quick thumbs up would work. Okay, we have messages. Yes, 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 yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, Ghulam Mustafa. Thank you, Nayab. Thank you. Okay, great. So, databases क्या है? First of all, academic databases are the places, online libraries where you can find, authentic, peer-reviewed research papers or scholarly, articles. Why why these academic databases matter? ये हमारी रिसर्च रिव्यू के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? Why these are important? Because academic databases contain peer-reviewed, scholarly and authoritative research papers. अब ये क्या होता है कि इस इन इन databases के अंदर that we will be discussing obviously, I'll be telling you कि कौन सी discipline में we will be covering inshallah all the disciplines, but if I miss some, so just do let me know and I'll share the details of the databases for that discipline as well. But these databases are basically sources for methodologically sound research papers. These research papers are written by the experts in the field and they are traceable through the citation and the references. Uh, because these databases actually provide you the metrics of uh, how much the journal is valuable, how much journal get citations in a year and in last 5 years or 10 years, right? सो ये जो डिफरेंट डेटाबेसेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डेटाबेसेस हमारी ऐसी प्लेसेस हैं ऑनलाइन जहाँ से हम जर्नल्स फाइंड कर सकते हैं या रिसर्चेस फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी यूजुअली हम जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्या मतलब ओवरऑल इन एवरीवेयर इन इन द वर्ल्ड, पीपल rely only on Google Scholar, right? Google Scholar पे rely करते हैं and whatever they find from there, they just download it and include it into their literature review. Most of the times we don't read all complete paper. We just read the title and then abstract and then we are done. Okay, we just take couple of lines from the abstract and we add them into our literature review, and that's not particularly the right thing to do in the authentic and original research. Because as I told you yesterday, that research is a very time-taking process and it is very, important to keep the originality and keep the rigor intact in the process of research. Because if you do the research which is not as authentic and as rigorous, so it loses its essence, and
the research is not applicable and research is, invalid, then what is the, purpose of doing the research? We just lose the essence of doing research, right? Research, the main purpose of doing research is to develop the knowledge, right? Or recreate the knowledge that is, either it is already been produced, or we are just recreating it, we are just reconfirming the knowledge created is valid, or we just produce new knowledge. And in both cases, basically we are doing something very, very important for the future generations or the future of a particular field. Right. So if we do not care about the literature review, the knowledge base that we already have, as I told you, that literature review is not just a piece of writing that you write for your research paper. Rather, it is developing your own understanding about the particular topic or particular field or particular subject. You getting my point? So, for that purpose, basically, the database that we choose for finding research papers or literature review is very, very important, because the m- the more authentic and more reliable database is, the more authentic research will it provide, and consequently our own research will be more reliable and authentic. And it will increase our chances to publish this research in very, authentic and reliable journals, and consequently we will be valued more. Getting my point? So, choosing an academic database uh, is very important, because it provides methodologically sound research papers. It also provides researches written by experts in the field, and it is traceable, because we can trace the citations and references of this particular research, that what type of researches this particular researcher has cited, and what kind of data, papers or literature the researcher has followed, right, to build their own understanding. And then we can also see the citation number as well, that how many people have cited this particular research paper. The more citation on a paper, the more paper is, authentic and reliable. You getting my point? Also, using databases enhances academic credibility, research reliability, and publication readiness. The more, academic and authentic database is, the more your chances are to be published in a good journal, right? Research quality depends not only on what you write, but where your evidences come from. As I told you, कि जितना authentic and important valued journal से आपका पेपर होगा जिसको आप साइट कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी जो एविडेंस है वो क्रेडिबल होती जाएगी, राइट? तो आप जितना ज़्यादा अच्छे पेपर्स को साइट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। पब्लिकेशन आसानी पब्लिकेशन को उतना आसान बना देगा आपके लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज आपके जो एविडेंसेस हैं, जो नॉलेज आपने प्रोड्यूस की है, जो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है, उसके थ्रू आप बता रहे हो साइट करके कि भाई देखो, मैंने ये इतना स्ट्रॉन्ग एक रिसर्च जर्नल है, उसके अंदर ये रिसर्च पेपर फलां बंदे ने पब्लिश किया है, और मैं इस रिसर्च पेपर को पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, तो मैं हर एक पेपर को जो है ना वो ऐड नहीं कर रहा, रादर आई एम ट्राइंग टू गेट मोस्ट वैल्यूड पेपर्स इनटू माय रिसर्च। You getting my point? So that's why academic databases are very, very important. Now, let's dwell in deep into the databases कि databases हैं क्या, कौन से databases ऐसे हैं जहाँ से हम अपनी research के लिए find कर सकते हैं research papers.
right? So databases कहाँ से मिलेंगे? You just go to Google and just search this word scopus and you will have the database link. और उस एक scopus की एक आपके पास ranking आती है, ठीक है? Web of Science भी also provides ranking. These are the organizations which you know uh, which basically rank research journals on different levels, on different criteria. And you can find the criteria over there that there are Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3, and there are multiple other, kind of uh, criterias whereby these which are used by these organizations to rank the journals and articles. You getting my point? So these basically journals or these websites also have certain libraries in itself, like they provide databases, they provide open access articles where you can find the good articles, well reputed articles, which you can use in your research, right? So ये जो Scopus, Web of Science, and Scholar, Google Scholar, these are basically online platforms where you can find the articles, right? And you can also add ResearchGate into it as well, right? Also, academia is another, online source where you can find the different articles, right? But these are Google Scholar, ResearchGate, and academia are less important, right? Less important because they does not have any mechanism for choosing a research paper on their website, right? Anyone can, upload a paper on Google Scholar, ResearchGate, and Academia. But Web of Science and Scopus have a proper, mechanism for selecting papers for on their websites, right? So that's these are the multidisciplinary databases where you can find the research papers about multiple disciplines, or there is no kind of limitation of discipline for uploading a paper, right? And for education and social sciences, ERIC is one of the best kind of research database where you can find uh, database articles uh, which are focused on education policy and practice oriented research, right? These they provide basically the evidence based studies which are focused on policy and practice oriented research. Getting my point? देन वी हैव साइक इन्फो, साइकोलॉजी के लिए होता है ये, मोस्टली यूज ऑल्सो एजुकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज भी इसमें मेंशन होती हैं. बिहेवियरल स्टडीज आर अगेन द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. सो PsycInfo is also another very authentic and reliable database for searching articles from or research papers from, right? Then we have sociological abstracts. You can find their social theories, cultural and institutional studies, like organizational studies की बात अगर आप कर लें मैनेजमेंट साइंसेस में, या organizational behaviors की studies होती हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी. So you can find multiple kind of studies over there, right? And I would really really request you all people to just subscribe their online free versions where you can find the information about research papers and research trends. You can also find research trends over there as well, because these databases have multiple journals in them, right? And these journals actually announce the issues and publications, they announce call for papers, and they have certain themes in it. So there you can find what are the trends that journals are looking for, and I should go for paper publication. If I want to publish a paper, I should first go for the journal which I'm intending to uh, publish my paper in.
एंड उसके बाद वहाँ पे देखूंगा कि भाई वहाँ पे वो पर्टिकुलर जर्नल जो है वो कौन से इशू के, उसका जो इशू है वो कौन से थीम्स के जर्नल पेपर्स को पब्लिश करने के लिए वो कॉल आउट कर रहा है, राइट। लाइक हमारी जो सबसे बड़ी गलती आई फील इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स आर मेकिंग, they just do research on the basis of what they like or what they want to do. They just they do not consider the literature review, because literature review padna is a very hectic process. Obviously studying all the research papers and understanding and even finding them is a big headache. तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम क्या करते हैं, हम जाके जाते कोई भी गूगल, आजकल तो जो करंट प्रैक्टिसेस हैं, इवन इन माय यूनिवर्सिटी आई find a lot of students working on research papers because our university kind of provide free commute to the conferences. So uh, our students are very enthusiastic about research that our university is facilitating, obviously, so they try to make more out of it. So what they do, they actually just go on, they just get some interest in the subject or the course they are studying, and then whatever course is, they just think about brainstorm के भाई हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, right, and then they go take help from AI, और AI उनको बता देता है एक टॉपिक, और फिर they just start working on research. When it comes to literature review, they just ask AI to write a literature review for them, and obviously literature review on AI is of very old, most of the times it is old research papers, and but if you ask it, ask AI, "Okay, provide me some new researches," so it does not provide new researches, rather it just provide the updated years, right? So that is the great mistake that all the students around Pakistan are doing. So my suggestion always to the students is that please do the literature review, do the proper literature review, go to the databases, search for the articles, search for the journals which are very relevant to the field that you are working on, and find the trend what is being researched in the in this field or in this course or in this discipline, and then decide what you want to do. Because obviously if you decide something which is not trending, which journals are not um accepting, so what is the mean of doing this research? There is no uh, no objective of the research being done, right? So that's something we should work on. We should always look for the databases where we find a lot of journals which we want to we can decide the journal on of our choice based on the different criteria, obviously. Okay, which criteria my research could fall in, and then what effort I would put into my research so that I can publish my research paper into a very reputed journal. So जनरल डिसाइड करें, देन यू गो फॉर इट्स थीम्स कि वो किस थीम्स के ऊपर रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं, एंड देन डिसाइड योर चॉइस. So that's the way of choosing a topic. You getting my point? Obviously your interest is very important in the process of choosing topic, research topic, but also considering okay, what is being published these days is also important, because if your topic or if your interest is not relevant, there is no way you can publish your paper in a good reputed journal, and obviously your efforts would go in vain. You getting my point? Then we have humanities and linguistics. We have JSTOR. We have MLA International Bibliography. We have Project Muse. So these are the databases basically, which provide you the conversations. Basically, these databases are just like social media, where you interact with people online, and you people post something and there become a trend, right? So people started to post something similar,
right? Just like social media trends, there are trends in research, right? Or these trends are, we can find these trends on these databases related to our own discipline, what discipline we are in, right? So these are the, databases which are relevant to I feel basically. So I have added my these databases into this presentation. Obviously, for engineering, there is a database called IEEE, which is very very important, where you can find new innovations, you can find, patents and a lot of new things of the research that is being done in your field. So you can find there are multiple other fields. You can search the databases for your own discipline, and you will find a lot of databases, right? So searching the database is very important. I just mentioned these because earlier five are general, multidisciplinary. You can find any research on them. Then we have education specific databases. We have humanity and linguistics specific databases, right? So I hope this is clear to everybody. If anybody has any questions, you can ask. Then we come to the concept check. As I told you that our students overly rely on the Google Scholar, and what may, be the consequences for over reliance on Google Scholar. These include low quality and non-peer reviewed studies. Obviously, there are a lot of journals, जैसे मैंने कल mention किया था कि there are a lot of journals जो कि वैसे ही रिसर्च पब्लिश कर देते होते हैं, राइट? आपसे पैसे लेते हैं और आपकी रिसर्च पब्लिश हो जाती है 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, राइट? दीज जर्नल्स आर नॉट अथेंटिक, not authentic by any mean. Like they just get certain criteria fulfilled, and in Pakistani HEC ranking, they just get ranking. Why? Because that is the easiest way to get why ranking is very easy to get for a journal. You just need to have 5 issues, and you have to articles around to 50, अराउंड 50 आर्टिकल्स होने चाहिए आपके पास, अराउंड 5 इश्यूज आपके जो है वो पब्लिश हुए हुए होने चाहिए, अराउंड 2 इयर्स आपको हो चुके हों. तो दैट्स द बेसिक मिनिमल क्राइटेरिया फॉर अ जर्नल टू बी इंक्लूडेड इन category Y. So in Y category, a lot of paper journals are there in Pakistan which ask you for money, and they just you know publish your paper without rigorous review. Or, although they follow some review process, but obviously they do not follow rigorous process. Getting my point? So सर कोई अच्छा सा फ्री जर्नल बता दें, इंटरनेशनल और इन पाकिस्तानी, फॉर एक्स मेडिकल एक्स कैटेगरी और Q2. All right, Naya, we will discuss that on later, because obviously I cannot have any journal in mind at the moment. सर थोड़ा स्लो बोलें, आवाज़ सही से नहीं आ रही है. ओके, who's this? फरीहा. Sorry, Fariha, I will be little more slow. ओके, जस्ट I'm just starting to have tea, तो फिर आपके साथ स्लो ही हो जाऊंगा मैं. ओके, तो ओवरलैंड्स ऑन गूगल स्कॉलर में इंक्लूड लो क्वालिटी पेपर्स एंड नॉन पीयर रिव्यूड स्टडीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया. फिर मिस डिसिप्लिन स्पेसिफिक डेटाबेसेस, आप इस डिसिप्लिन स्पेसिफिक डेटाबेसेस को मिस करा देते हो. मे बी आपका जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो डेटाबेस है उसके ऊपर ट्रेंड टू डिफरेंट चल रहा हो, और आपको जो गूगल स्कॉलर स्टडीज दिखा रहा है वो डिफरेंट स्टडीज दिखा रहा है, राइट? तो दैट इज इन अदर uh, drawback of over reliance on Google Scholar. Also, methodological rigor जो है वो reduce होता है on Google Scholar, because everybody can upload their paper without any review, without any rigorous process of checking the paper, whether the quality of paper is even publishable or not, or even it is the paper is uh, you know uh,
you know, good enough to be included into the review or into our knowledge whether the research is reliable or not. So that is these are some drawbacks of over reliance on Google Scholar, right? So it is always better to go for your databases. Go to database, check for the trend, check for the papers which are being published, and search there. Even if in your interest, go there, search the papers of your interest, and then read them. Read their methodology, read their findings, what they are trying to do in the research field, right? And that's where you can find, you can develop your understanding in a better way. I hope it is clear. Then we have search strategies. सर्च स्ट्रेटजीज क्या है? सो सर्च स्ट्रेटजीज जो लिटरेचर रिव्यू के लिए हैं, इट इज़ टू बेसिकली वी बिगिन विद रिसर्च प्रॉब्लम और द कोर कॉन्सेप्ट और द वेरिएबल्स और द फिनोमेना दैट वी आर ट्राइंग टू स्टडी। अगर आप में से कोई स्टडी कर रहा है, रिसर्च करंटली कर रहा है, तो जस्ट गिव मी योर टाइटल एंड आई हेल्प यू स्टार्ट विद दैट, और रिसर्च प्रॉब्लम और कौन का कोर कॉन्सेप्ट आपका जो है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। रिव्यू करना है ना इसको, तो देन वी विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आती जाएं। सो एनीबडी who can write their title or core concept, and I will help you search research articles on that. So let me just see who are the participants right now. Jadul. Okay. Uh, we have Nayab. Nayab, are you working on something currently? Okay. Nayab has written something. Okay, someone has written something. Nayab, sir, it's okay. Nayab के बाद. Yes, sir, I'm doing research right now. Yes, Fatma. Okay, yes, on systematic review. Great. Effects of resistance training on the mineral content of bone in children. Great. That's your title, Ghulam Mustafa. Great, great, great. This is related to medical sciences, Mustafa. Okay. Yes, Nayab. Right. Sports science. Okay. Okay. Nayab, can you write the core concept of your literature, systematic literature review? Just give me that, and we will be also focusing on that. Okay. So ये sports science का है. So first of all, what we will do, we will go to. Wait a minute. हम इसको ऑन करते हैं, एक नया टैब खोलते हैं, और इसके अंदर हम डेट academic databases. Hmm, and here on the screen. Okay, so you people can see my screen. What you can see? Okay, I think you people can see the academic databases for sports sciences on your screen. Can anybody give me thumbs up? Hello, hello. Am I audible, guys? Hello. Yes, you're audible. sir. Okay, it is visible. Okay, great, 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 great. Thank you, Kuratullah, and thank you, Ghulam Mustafa. Thank you, Muzammil. Okay, so this is one of the databases, right?
Sport Discus. That is the database where you can find the research papers, right? For your research in sports sciences. अब इस डेटाबेस को ओपन करेंगे. ये प्रॉबेबली मेरे ख्याल से लॉगिन मांगेगा, बट ओके, यहाँ पे सर्च करेंगे. Find the information about the product or the service that you service and more. राइट. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वी विल कॉपी जस्ट द मैसेज ऑफ यहाँ से गुलाम मुस्तफ़ा over here and paste it here and then boom. Okay, there are no results found, right? अब हम देखते हैं कि start your research, product, solutions for public libraries, academic libraries, corporations, publishers, researchers, students. Okay, help build a manage collection meeting. Okay, researchers find organizations to access products and start your research. नहीं, यहाँ पे क्या है, events, scholars, blog posts. Okay, products में क्या है, maybe full text finder. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, नेक्स्ट जनरल एंड ई बुक डिस्कवरी, फुल टेक्स्ट फाइंडर, द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, अब इसको हम सर्च कहाँ से करें. हम्म, ओके, ये तो है, बट यहाँ पे इसको हम सर्च कहाँ से कर सकते हैं. इसको एक मिनट ले आओ, यहाँ करो. ओके, मे बी दे हैव डिफरेंट. पीछे आते हैं, पेंसिल्वेनिया पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है. कलेक्शन, स्पोर्ट्स कलेक्शन, यहाँ पे सर्च करके देखते हैं. this is the direct paper that you are currently looking for, right? यहाँ पे ये सर्च करेगा इसको, और अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता, पेपर probably नहीं मिलेगा, because obviously this research is new. तो इससे रिलेटेड हम रिसर्च देखेंगे. दूसरा क्या टॉपिक क्या है. अच्छा, जस्ट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द सर्च स्ट्रेटजीज कि किस तरीके की सर्च स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं, देन वी विल बी एबल टू फाइंड अथेंटिकली. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को या कोर कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे. अगर वहाँ से हमें रिसर्च नहीं मिल रहा, डेटा आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, तो हम फिर क्या करेंगे, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ जनरेट सिनोनिम्स, रिलेटेड टर्म्स और अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स. ठीक है, सेम पेपर को डिफरेंट तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे ये नहीं मिला, ठीक है जी. फॉर इंस्टेंस, जस्ट हम गूगल स्कॉलर पे ही इस ट्राई करेंगे ये सारे, बिकॉज वो फ्री होता है, तो वहाँ पे हमें एक्सेस मिल जाती है. राइट, स्कॉलर, गूगल. अच्छा, यहाँ पे हम जस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इजीली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें. पेपर्स को यहाँ पे सर्च करना कंपैरेटिवली इजी है, राइट. अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन बॉडी कंपोजिशन एंड बोन मिनरल कंटेंट है. अब दिस इज रिलेवेंट, बट इट इज वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, राइट. समझ रहे हैं. दिस इज रेलेवेंट, देन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऑन बोन मिनरल कंटेंट एंड डेंसिटी इन एडोलेसेंट फीमेल्स. This is very much related to the you know research of Mustafa, which is very much related, right? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे. इसका यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका जर्नल देखेंगे. कैनेडियन साइंस पब्लिशिंग, दिस इज द पब्लिशिंग हाउस, राइट.
और इसका जर्नल होना चाहिए यहाँ पे, कैनेडियन जर्नल फॉर फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये पब्लिकेशन हाउस है, ये उसका जर्नल है, और ये उसका वॉल्यूम नंबर है। वॉल्यूम कौन सा है? 74। और नंबर ऑफ द पेपर कौन सा है? 9th। और ये उसका टाइटल आ गया। अब ये पूरा एक्सेस हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ये भाई एक्सेस? क्योंकि ये पेपर पेड है, ये जर्नल पेड है। समझ रहे हैं? अब इसका एब्स्ट्रैक्ट हम कर सकते होते हैं। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन तक भी हमारे पास अवेलेबल है, बट वेरी शॉर्ट। तो ये लॉक्ड है। यहाँ पे एक्सेस लेने के लिए या तो आपको पर्सनल करना पड़ता है लॉगिन, या इंस्टीट्यूशनल लॉगिन करना पड़ता है। मैंने आपको ये शायद कल भी बताया था, या लास्ट टाइम जब हम फ्री वेबिनार कर रहे थे तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। अच्छा, तो इंस्टीट्यूशनल हम जब लेते हैं जब हमारी इंस्टीट्यूशन का इन पब्लिशिंग हाउस के साथ एमओयू होता है, या कोई सेटिंग होती है, या इन्होंने सब्सक्राइब किया है हमारी यूनिवर्सिटी ने, इंस्टीट्यूट ने, तो हम अपनी इंस्टीट्यूशन वाली आईडी को यूज़ करके, वेदर यू आर फैकल्टी और स्टूडेंट, यू गेट द इंस्टीट्यूशनल ईमेल, जो आपकी, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी है, तो मैं जब मेहरान में पढ़ाता था तो मेरी ईमेल होती थी masud.husain@faculty.mut.edu.bk। सिमिलरली जो भी जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे MUET.edu.pk, ये मेहरान की एक्सटेंशन है, तो आपकी यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी, वही आपकी इंस्टीट्यूशनल ईमेल होती है। तो वो ईमेल अगर आपकी इंस्टीट्यूशन ने उनके साथ कोई सेटिंग की हुई है, तो यू कैन हैव द एक्सेस टू दीज आर्टिकल्स। अब वेब ऑफ साइंस पे मेरी उस ईमेल से एक्सेस होती थी, तो वहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता था, या जैसे एल्सवियर है तो वहाँ पे भी एक्सेस होती थी। What does include patents mean? Patents are basically when you invent something, some software or some algorithm, some machine. So you basically apply for the patent in your government, राइट? वो हर एक गवर्नमेंट का अपना एक प्रोसेस होता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, हर कंट्री का अपना पेटेंट रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करते हैं। आप बताते हैं कि वेदर इट इज़ योर ओरिजिनल वर्क। जैसे हमारा रिसर्च पेपर्स का प्लेजरिज्म चेक होता है, तो पेटेंट्स का भी एक उनकी डायरेक्टरी में चेक होता है कि वेदर दिस पेटेंट इज, दिस मशीन हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड बाय समवन एल्स और नॉट। ठीक है, और कितना परसेंट सिमिलर है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें पेटेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए वो चेक करते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड यू सम डिटेल्स, राइट? कि वेदर दे गिव यू द पेटेंट, और दे जस्ट से कि भाई हम आपका जो आपने जो इन्वेंशन की है वो पेटेंट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑलरेडी इसी जैसी ये आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारी पेटेंट हिस्ट्री में या डायरेक्टरी में। गेटिंग माई पॉइंट? Okay, sir, can you search the consensus NLP AI and write a topic, provide literature review for any topic. This provides, this also provides authentic. Okay, consensus AI, इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया कम है, बिकॉज मैंने सुना तो है इसके बारे में कि दिस प्रोवाइड्स ऑथेंटिक रिसर्च, बट ऑब्वियसली आई हैव नॉट ट्राइड इट, सो आई कैन नॉट से इट ऑथेंटिकली। ठीक है क्या जी? Alright, so this is the way to get access. Okay, and then we were here on our topic. Okay, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कोर आइडिया सर्च करेंगे। कोर आइडिया के साथ मिल गए पेपर्स, वेरी गुड, वेल इनफ। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, जैसे इनके वेरिएबल्स, इनके जो वेरिएबल्स हैं मुस्तफ़ा के, वो यहाँ पे हमने जब सर्च किया तो और गो बैक, इनका एक वेरिएबल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दूसरा मिनरल कंटेंट, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट स्टडी है ये, ऑब्वियसली इफेक्ट से हमें मालूम होता है।
ठीक है जी। बोन मिनरल कंटेंट एक इनका क्या कहते हैं कि वेरिएबल है, और दूसरा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दूसरा वेरिएबल है। और यहाँ इस स्टडी में तीन वेरिएबल हैं। डेंसिटी ऑफ द मिनरल कंटेंट इज अगेन द यू नो वेरिएबल हियर इन दिस स्टडी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्टडी के साथ हमारे अगेन वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ गूगल स्कॉलर हमें बोल्ड करके दिखा रहा है। जैसे इफेक्ट्स एक कीवर्ड है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक कीवर्ड है, बोन मिनरल कंटेंट एक कीवर्ड है, और चिल्ड्रन एक कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड्स हमारे टॉपिक से हमने जो सर्च किया है वहाँ से मिलेंगे इस रिसर्च के अंदर, इस टाइटल के अंदर, वो इनको बोल्ड कर देगा, और जो नहीं मिलेंगे उनको वो रखेगा कि भाई दिस इज सिमिलर एंड दिस इज डिफरेंट। जैसे ये डेंसिटी वाला वहाँ पे पार्ट नहीं है, तो यहाँ डेंसिटी को या एडोलेसेंट फीमेल्स को इसने हाईलाइट नहीं किया या बोल्ड नहीं किया। गेटिंग माई पॉइंट? ओके जी। सो दैट्स हाउ वी गो फॉर वेरिएबल सर्च। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा वेरिएबल सर्च तो हो गई हमारी। फिर आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम यूज़ करेंगे। भाई हो सकता है कि हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका सिनोनिम किसी ने यूज़ किया हो अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं। फिर रिलेटेड टर्म्स जो हो सकते हैं उस टर्म के, वो हम यूज़ करते हैं। फिर अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स भी हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस रिकग्नाइज है, तो रिकग्नाइज की स्पेलिंग में IZE भी आता है और ISE भी आता है, तो ये हम अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं इसकी। ठीक है। और जैसे एनालाइज है, तो एनालाइज में ZE भी आता है, SE भी आता है, तो वो हम डिफरेंटली ट्राई कर सकते हैं अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स। ठीक हो गया जी। फिर है जी, यूज thesaurus टूल्स इन databases, कीवर्ड फॉर सेमिनल पेपर्स। thesaurus टूल्स होते हैं कि दीज आर द आर्काइव्स और द पेपर्स वेयर यू कैन फाइंड। अब इस ये जो पर्टिकुलर हमारे पास जर्नल था, जो डेटाबेस थी स्पोर्ट्स वाली, स्पोर्ट डिस्कस वाली, उसके अंदर भी thesaurus होगा। सिंस वी डू नॉट हैव इनफ टाइम तो हम उसके thesaurus पे नहीं जा रहे हैं, बट ओबियसली एवरी डेटाबेस हैज देयर thesaurus टूल वेयर दे स्टोर द रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स। तो वहाँ पे जा करके आप अपना कीवर्ड लिख करके पेपर्स, सिमिलर पेपर्स आप वहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है अल्टरनेट वर्ड्स की, अल्टरनेट कीवर्ड्स की, कि जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर इंस्टेंस एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग एक हमारा टाइप टॉपिक है, इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना सर्च कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे कीवर्ड्स क्या लिखे। ओ सॉरी, क्या कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एंड ओ सॉरी, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वी हैव दिस एकेडमिक राइटिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इसको सर्च करना है तो हम ये डिफरेंट तरीके से इसको चेक करेंगे। सिमिलर टर्म एकेडमिक, स्कॉलरली, रिसर्च, राइट। ये एकेडमिक के तीन अल्टरनेट हमने यूज़ किए, सिनोनिम्स उसको कह ले। ठीक हो गया जी। फिर राइटिंग का एक हमने अलग से बनाया कि एकेडमिक राइटिंग हम डायरेक्टली सर्च करें, इससे बेटर है कि हम एकेडमिक डिस्कोर्स सर्च करते हैं। तो ये सारे आपके अल्टरनेटिव वेज हैं, टूल्स हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपनी स्टडी को या अपनी टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। ओके जी, गुड। देन वी हैव बूलियन ऑपरेटर्स। Boolean operators क्या होते हैं? Basically, these are the ways where you don't
अब यहाँ पे जब हमने सर्च किया था ना, ये जो हमने सर्च किया है, ठीक है, तो हमने एज इट इज सर्च कर दिया है, राइट। इसमें इज इट इज सर्च कर दिया है, और अल्गोरिथम अपनी मर्जी से जो रेलेवेंट उसको आर्टिकल्स मिल रहे हैं या जो टाइटल से रेलेवेंट मिल रहे हैं, वो हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, राइट। वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर algorithm to decide to and produce papers related to this keyword. This is basically the keyword, right? और these are the multiple keywords. इसको हम लॉन्ग कीवर्ड कहते हैं। सिंगल वर्ड होता है तो उसको हम सिंगल, एक से दो, जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो उसको शॉर्ट कीवर्ड्स बोलते हैं। तीन या तीन से ज्यादा जब वर्ड्स हम किसी चीज को सर्च करने के लिए यूज करते हैं तो हम उसको लॉन्ग कीवर्ड कहते हैं। तो लॉन्ग कीवर्ड्स जितने होते हैं उतना ज्यादा हमारा स्पेसिफिक होता है, ठीक है, उतना हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो उतने स्पेसिफिक होते हैं, राइट। ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई ना कि हमने एक लॉन्ग कीवर्ड बता दिया इसको गूगल स्कॉलर को, और गूगल स्कॉलर ने अपनी एल्गोरिथम के बेसिस पे डिसाइड करके हमें कुछ रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स शो कर दिए, राइट। नाउ, Acha, for people who cannot understand Urdu, let me just explain them in English that uh, while searching this, we relied on algorithm to decide and produce the relevant research papers, right? And the Boolean operators, which I just mentioned in my PPTs, right? Boolean operators are basically the things or the keywords which help you decide on and let the you just take the command by yourself, not allowing algorithm to decide, rather you yourself decide whether which paper you want to see on the screen, which paper you want Google Scholar to search, and which paper you do not want a Google Scholar to search, right? So ये हैं तीन, there are three Boolean operators, and or, and there is the third, which is not. Not the and is used for precision. It is a precision tool. It narrows the results that you're looking for. Or is the expansion tool, which also broadens your research, कि आप उसको broad कर देते हो. And then there is this not, which is the filter which basically excludes irrelevant fields. अब इसको अगर आपको ये properly नज़र नहीं आ रहे हैं तो let me just redesign them in my designer, ताकि आपको ये clearly नजर. I hope it is clear now, guys. It is clear. I hope it is clear. Uh, okay. This is end. This is or, and this is not. Okay, these are basically the tools which you can use in your research, and they will exclude others. अब इसको हम कर सकते हैं research. For example, यहाँ पे in children, not adolescents. अब now ये जो मैंने not use किया है, ठीक है, not, not, this not will exclude this study. अब now यहाँ पे एडोलेसेंट फी आ गया है अगेन, ओके, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया, कोड 10, एंड देन नाउ यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक स्टडी ऑन चिल्ड्रन आ गई है, बाकी स्टडीज जो हैं वो खत्म हो गई हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट?
not on adolescent. So effect of resistant training for 12 weeks on serum calcium, phosphorus, and parathyroid hormone levels of urban and rural children. The effect of dash dash dash. Getting this is what happens when you do use these boolean. अब यहाँ पे मैं ए एन डी यूज करके देन सर्च करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन, क्योंकि इस तरह की कोई रिसर्च नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे अब इसको सर्च करूंगा तो ये आ जाएगा। अब एडोलेसेंट्स आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन, यहाँ पे मैं इसको ऐसे, यू सी, नाउ हाईलाइट हो गया एडोलेसेंट्स। क्लियर? आपको जितनी सारी एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपको सिमिलर स्टडीज मिल रही हैं जो जो वहाँ पे अवेलेबल हैं ऑन दिस पर्टिकुलर। यहाँ पे भी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस है। ठीक हो गया जी। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, ठीक हो गया जी। सो यू कैन फाइंड सिमिलर स्टडीज गेटिंग यूजिंग दिस बूलियन। सिमिलरली और भी इसी तरह से यूज होता है। ठीक हो गया जी। ओके, कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो ये हैं जी हमारे बूलियन ऑपरेटर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर टू इनहेंस योर सर्च, राइट। टू स्पेसिफाई, अगर आपको प्रिसिशन चाहिए तो आप एंड यूज़ करते हो, अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए तो आप और यूज़ करते हो, और अगर आपको फ़िल्टर चाहिए तो आप नॉट यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया जी। देन कमिंग बैक, अच्छा, एडवांस रिसर्च टेक्निक्स। एडवांस रिसर्च टेक्निक्स, सर्च फ्रेजेस यूजिंग कोटेशन मार्क्स, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको करके दिखाया था। दूसरा, टंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकेशन यूज़ कर सकते हैं टू कैप्चर द वर्ड वेरिएशंस। जैसे फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका रेंज फिल्टर हो गया कि ईयर कौन से कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा होना चाहिए, मेथडोलॉजी कौन सी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट उसके डेटाबेसेस के ऊपर मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये है सिंस 2004, सिंस 2000 कस्टम रेंज हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे 2017 टू 2025। ठीक है। देन आई विल सर्च तो इट विल ओनली शो द रीसेंट स्टडीज। यहाँ से 2017, 2020, 2021, अगेन 2020, एंड देन 2021, 2024, 2023, right? You can see there is no study beyond 2017। 17 से पीछे कोई स्टडी मेंशन्ड नहीं होगी, राइट। देन एनी टाइप आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, राइट। यहाँ पे मैंने रिव्यू आर्टिकल्स लिख दिया, तो दीज आर ओनली रिव्यू आर्टिकल्स। क्लियर? अच्छा, देन इसके अलावा वी हैव डिफरेंट सॉर्ट बाय डेट, इसको हम कर देंगे। तो ये दीज आर ओनली 25, 2025 के हमारे पास पेपर आ गए हैं। गेटिंग? ये आपको इसी तरीके से आप सॉर्ट बाय रेलेवेंस करेंगे या सॉर्ट बाय डेट करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा एनी टाइप। आपके पास मल्टीपल है, इसको करेंगे, इसको आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोर रिव्यू टाइप आएंगे। ठीक है जी। रिव्यू आर्टिकल यानी इट कैन बी काइंड ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे जो सिस्टमेटिक रिव्यू लिखा हुआ है एंड मेटा एनालिसिस। ठीक है। एंड ये कोई स्कोपिंग रिव्यू हो सकता है और वट एवर रिव्यू कैन इट बी, बट यहाँ पे सिर्फ आपको रिव्यू पेपर मिलेंगे। यहाँ पे प्राइमरी डेटा यूज नहीं हुआ, रादर यहाँ पे सेकेंडरी डेटा यूज हुआ है। क्लियर? तो ये आपके तरीके हैं जिससे आप रिसर्च कर सकते हो आर्टिकल्स को। कमिंग बैक, ठीक है, ये फिल्टर्स आपके हो गए। डॉक्यूमेंट टाइप आपकी डिपेंडिंग ऑन योर डेटाबेस, व्हाट ऑप्शंस अ डेटाबेस प्रोवाइड्स फॉर फिल्टर्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने जो डेटाबेस है उसके ऊपर सर्च कर सकते हो। ठीक हो गया जी। देन सर्च स्ट्रेटजीज आर लाइक एडजस्टिंग माइक्रोस्कोप लेंस, क्लैरिटी improves विद प्रिसीजन। जितना ज़्यादा आप क्लियर
उसके फिल्टर्स को यूज़ करोगे, क्लियर सर्च स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, सर्च टेक्निक्स यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? As I told you, it is very time taking process to write a literature review. Literature review हम उसको बिल्कुल भी वेटेज नहीं देते हैं in Pakistan, and I really condemn this, and sometimes get disappointed by the attitude of our new researchers in Pakistan, that they doesn't value literature review as literature review is important, right? So we should give respect to literature review. We should take our time. We should give proper, space and time to. Okay, sir, आवाज नहीं आ रही। कितना है आप मेरे रिलेटेड भी बता दें। ट्रू एज अ टीचर एंड रिसर्चर, I find it how challenging it is. Yes, it is really challenging to do a literature review, but our researchers really uh, doesn't value literature review as much, and I I really get disappointed by this attitude of researchers. Okay, sir, मेरी sir, I can't see your screen. Okay, फरिया says आवाज़ नहीं आ रही। अभी आवाज़ आ रही है फरिया आपको? ओके सर, मेरे टॉपिक से रिलेटेड भी बता दें। नायाब, क्या था आपका टॉपिक? जस्ट गो अपवर्ड मे बी दिस ऑल्सो अपवर्ड। ओके नायाब, आपका टाइटल क्या था, टॉपिक क्या था? डिड यू राइट इट? ओके, पर्सनली आई हैव बिन continuing literature review until finalizing studies, having students revise it even after study is finished. Muhammad Muzammil Mehman. Obviously, literature review doesn't end anywhere during your study. Even after your data analysis and when you are publishing, right? Before publishing, you just go for. Okay, let me just reshare my screen because I think some people might have issue with that. Let me just reshare my screen. I hope it is visible to you, Mr. Zubair. Yes, sir, now it is visible. All Thank right, you, sir. great. Okay. So literature review is very important. Clear? Then we are just giving प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया है, यू जस्ट डेवलप couple of Boolean strategies, write your tentative research idea, whatever research idea you have and you are working on. Just go and check it on internet and tell me what you experience. We are just having 10 minutes। इट्स 7:19। आप 7:30 तक इसको सर्च करें, आप अपना आइडिया, और फिर बताएं कि व्हाट यू फाइंड। यू कैन जस्ट यूज गूगल स्कॉलर at the moment because we do not have enough time to roam around different databases. We just will focus on Google Scholar at the moment, and later on you can do it on your databases related to your discipline, and then if you want to share the experience you can share, right? So आपने दो boolean सर्च स्ट्रिंग्स बनानी है, और आपने 3 keywords आपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करने हैं एंड वो बताने हैं। ठीक हो गया जी? और फिर उसको सर्च करके बताना है कि हाउ डू डिड यू फाइंड द रिलेटेड आर्टिकल्स और नॉट। क्लियर? दैट्स योर टास्क। जस्ट 10 minutes and we will be discussing that again. Clear? Instructions clear है सबको? If anybody has any questions you can ask. Okay.
Whether the session is ended or we are in activity still? I, we cannot hear you, sir.
Okay. Right, guys, I was just little out because I gave you an activity to do. That's why my voice was not coming and you could not hear me. So there is no need to get worried about it because I was not speaking. That's why you were not receiving any voice. And okay, great. Sorry if my mic was on. Okay. It's all right, Muzammil. It's all right. Okay, I have connectivity problem, sir. I cannot search. My topic is impact of it, altitude, generation, and economic background. Okay, it's altitude or attitude. Okay. Right, guys. Did you finish the task? And can we start discussing it? If you people are free doing this, let's just get started. Hello, can you hear me, guys? Yeah. Okay, who's this? Who's trying to say something but unable to? Okay, Abda Parveen. Abda Parveen, can you hear me? You want to say something? Uh, yes. All right. If you Sir, think, tentative research ideas on diabetic mellitus focuses on evaluating the impact of structural practical exercises uh, such as aerobic and resistor training program on glycemic control and quality of life for adult patients with to diabetic in a community setting and keywords diabetes and regular exercise I think, and Abda, I think your voice is distorting, so there is this net problem. Okay. जज भाई मैं थोड़ी देर में आपको वापस कॉल करता हूँ. be Uh, Sorry, my internet connection was little unstable. Abda, can you please repeat your what you were saying? I'm sorry. okay. Can you hear me, sir? Yes, yes, I can hear you now clearly. Okay, sir. Tentative idea on diabetic mellitus on evaluating the impact of structurals practical exercises Mm-hmm. uh, such as resistant training program on glycemic control and quality of life in adult patients with type 2 diabetes in community setting. Okay, again, I think there And was little distortion at your keywords, end. Can you please write, Abda, can you please write? So can I'll be it is be very good for everybody to understand because there is little kind of distortion. Maybe it is at my side or your side, but there is a little kind of distortion. So if you write, it will be very helpful for us all to understand and interact. okay, okay.
All right. Are you finished writing or you writing, Abda? All right. Meanwhile, Abda writes, let's continue our discussion. If anybody with clear voice can discuss their topic and their experience of using Boolean strategies or operators and other search strategies that we just discussed, okay, how helpful these strategies were for your research, article searching or paper searching. If anybody with clear voice can discuss, guys. Nobody? If nobody has to share anything, then we will continue with what we were doing. Let's continue with starting inclusion and exclusion criteria. Exclusion and inclusion criteria is basically the criteria that defines what strategies we will be using in our literature review and strategies we will what research studies we will not be touching upon in our literature review, right? So this is basically the criteria which you know which will uh, set which will be set to whether this particular study rather research study or research paper be included in my research paper, which I'm going to do, or I will not touch or read this research paper because of this paper does not meet the criteria that I have made produced. And the purpose of creating this kind of criteria is that it reduces bias, it ensures transparency, and it ensures replicability. Because when you have a certain criteria, so other people can follow that criteria and then they can generate the results similar to the results that you generated or your research generated, right? So that has that is what replicability is, right? And what we how it ensures transparency, because you provide the criteria of adding research papers in your literature review, because we have this kind of uh, open public document which will allow us which we will present to public, or which we present to our audience or other researchers, that this is the prior criteria which I used to exclude and include papers, and that's why I included these papers and I excluded these papers, right? So it kind of give the proof of using certain papers and not using others, right? And that's the transparency. Also, it reduces bias in a way that sometimes it is a Pakistani practice again, that a lot of researchers, what they do, they cite their own papers in their papers. Like मैं अगर मैंने एक पेपर पब्लिश किया है, तो मैं दूसरा जब पेपर पब्लिश करने लगूंगा, तो उसके अंदर अपने पेपर की साइटेशन दूंगा। फिर जब मैं तीसरा लिखूंगा, तो फिर दूसरे तीसरे पेपर में अपने दोनों पेपर्स की साइटेशन दूंगा। जब चौथा लिखूंगा, तो पहले वाले तीनों पेपर्स की साइटेशंस दूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो साइटेशन काउंट है वो बढ़ता जाता है, ऑब्वियसली, राइट? बट व्हाट हैपेंस, इट इज बाइज्ड बिकॉज आई एम बीइंग बाइज्ड टू इंक्रीज माय ओन citation count, and without giving respect to the other related articles, and I'm being biased towards my own research, right, to increase my own citation count. So that's the biasness of using a paper. So if I had a criteria, then I will see whether this particular paper or this particular study uh,
meets the criteria, I will be adding into my citation list. Otherwise I will not add that into my citation list. So this is something that creates transparency. Having a criteria creates transparency, right? It is essential for systematic reviews, scoping reviews, and high quality theses or research papers. When you are doing thesis for your PhD, or when you are doing literature, systematic literature review, or scoping literature review, or meta-analysis, you basically use these criteria. So you have kind of evidence, or you have some kind of solid proof that to use these articles, the articles that you have used, right? So you have certain backing that the reason for using these articles, whatever articles you have chosen, right? तो उसके लिए आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होता है कि भाई ये प्रूफ है, इसकी वजह से मैंने, ये रीज़न है, इसकी वजह से मैंने जो है ये आर्टिकल्स को साइट किया है और बाकी आर्टिकल्स को साइट नहीं किया, राइट? सो सिंस इट increases your credibility. Getting my point? Then we have some common inclusion criteria, which is publication year, last 5 to 10 years maybe. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्राइटेरिया एक बना के फिल्टर बना के दिखाया था कि 2027 से 2025 तक जो स्टडीज़ हैं उनको मैं इंक्लूड करूंगा। पहली शर्त मेरी ये है। दूसरी शर्त ये है कि मेरी जो लैंग्वेज ऑफ पेपर होगी वो इंग्लिश होगी। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं पेयर्ड रिव्यूड स्टडीज़ को ही इंक्लूड करूंगा। जो पेयर्ड रिव्यूड जर्नल्स नहीं होंगे वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि पेयर्ड रिव्यूड कोई स्टडी है या नहीं है, उसका मुझे कैसे पता चलेगा? देन देयर कम्स द पार्ट ऑफ दैट जर्नल, कि जिस भी पेपर के जो भी पेपर जिस जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है, तो उसका मैं देखूंगा कि मेरा प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है। हर पेपर अपना पब्लिकेशन प्रोसेस बताता है। ओके, हर पेपर पब्लिकेशन प्रोसेस बताता है। फिर आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के देखते हो कि वेदर दिस पर्टिकुलर जर्नल is peer review or not peer review. If it is peer review, तो इसकी quality क्या है? Like what category does this article fall in, right? What is the Scopus ranking of this article, of what is Web of Science category, or ranking of this article, what is HEC category of this article, or this web journal, जिस भी जर्नल से आप आर्टिकल को साइट कर रहे हो। तो that's how you can use the inclusion criteria, कि भाई ये कैटेगरी होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक्स कैटेगरी से नीचे के पेपर्स को पब्लिश अपनी रिव्यू के अंदर नहीं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो वो आप वही आर्टिकल्स देखोगे जो एक्स कैटेगरी के अंदर है, उसके नीचे वाली कैटेगरीज को आप नहीं टच करोगे। या एक्स कैटेगरी होगी या फिर जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी होगी, तो ही आप पेपर्स को इंक्लूड करेंगे, वाई कैटेगरी को आप इंक्लूड नहीं करोगे। दैट्स द वे यू सेट द इंक्लूजन क्राइटेरिया। देन यू हैव स्पेसिफिक पॉपुलेशन। फॉर इंस्टेंस मैं फीमेल के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं वही सिर्फ पेपर्स को देखूंगा कि मैं जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट्स फीमेल हों, राइट? या फिर आप जैसे, ये तो हो गया जेंडर्ड सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ना। आप इसको दूसरे तरीके से इस तरह से कर सकते हो कि मैं एडोलेसेंट्स पे करूंगा, या मैं सिर्फ चिल्ड्रन पे करूंगा, या फिर मैं अडल्ट पे करूंगा। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया, पॉपुलेशन क्राइटेरियाज विच यू कैन सेट। कि भाई ये स्टडी, कोई भी स्टडी अगर फला इस कैटेगरी में होगी, और फॉर इंस्टेंस पब्लिकेशन ईयर होगा उसका 15 से 2025 तक, और इसकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, और वो पीयर रिव्यू होगा एक्स कैटेगरी का जर्नल, और उसके अंदर जो पॉपुलेशन होगी वो एटलीस्ट जो है वो फीमेल होगी। ठीक हो गया, फीमेल भी वो जो अडल्ट फीमेल है। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग पेपर्स। तो यू नाउ विल नेरो योर रिसर्च। ठीक है, आप अपनी सर्च को स्पेसिफाई करते जा रहे हो, राइट? एंड यू आर एक्सक्लूडिंग ऑल अदर फैक्टर्स और अदर पेपर्स जो कि आपके इसमें अंदर यूज हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज मेथडोलॉजी एज अ क्राइटेरिया एलिमेंट एज वेल। लाइक आप मिक्स मेथड रिसर्च स्ट्रेटजीज को सिर्फ स्टडी करो, या फिर आप क्वालिटेटिव को सिर्फ स्टडी करो, या फिर आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को सिर्फ स्टडी करो। सो यू कैन चूज, यू कैन स्टेट
you basically state right your criteria. You tell people that this is the criteria that I have followed to include the studies into my research, literature review. And that's give you the credibility. That is something that gives you credibility in a research, right? फिर you have a common exclusion criteria से again कि भाई जो opinion pieces होते हैं या editorials होते हैं of न्यूज़पेपर्स, आप उसको यूज़ नहीं करोगे, आप ब्लॉग्स को यूज़ नहीं करोगे, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट्स को यूज़ नहीं करोगे विदाउट फुल पेपर्स, आप स्टडीज़ आउटसाइड टारगेट पॉपुलेशन को जो है वो एक्सक्लूड कर दोगे, इररिलेवेंट आउटकम्स और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है जिसके रिलेवेंट आउटकम्स नहीं होंगे या कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट नहीं होगा तो उसको भी आप एक्सक्लूड कर दोगे। जैसे फॉर इंस्टेंस आप पेपर्स में आपने जो Muzamil, just give me a moment and I'll be coming back to you. ओके जैसे irrelevant context इन द सेंस हो सकता है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट देन दी दैट ऑफ यू अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन टीचर्स के ऊपर अगर मेरी मतलब पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी रिसर्चर्स के टीचर्स के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो अगर मैं उसके अंदर अमेरिकन स्टडी यूज़ करूँगा तो वो मेरे लिए उतनी अथेंटिक नहीं होगी बिकॉज द एक्सपीरियंसेस ऑफ पाकिस्तानी टीचर्स आर डिफरेंट देन दैट ऑफ अमेरिकन टीचर्स, राइट? सो their circumstances are different, their motivation levels are different, there are a lot of factors that are different in their American teachers than that of Pakistani teachers. So if I include that American study into the in Pakistani context, so that will be irrelevant. So I will only focus on the studies which I really want to do, right? So you just give the context as well, कि what context I will be using, what contextual background of my studies will be, right? So that's something that you do. Okay, altitude, great. Okay, all right. So I hope the inclusion and exclusion criteria is clear to everyone. Yes, Muzammil, you wanted to say something. Muzammil? Assalamualaikum. Can I speak? Yes, Muzammil, please. अच्छा तो thank you for your great session. Sir, I found one thing कि inclusion exclusion criteria basically depend on our title and our focus of study ना the and when you said कि we have to exclude many things if we are studying for example an editorial or any particular thing we can use that as reference ना not as a citation per se but we have to give reference for that ना. Yeah, see, we give references for everything that we use in our research, right? But I'm just giving the common exclusion criteria. If you particularly working on editorials or opinion-based pieces of of writings, so you can include it into your inclusion criteria, and other factors can be in excluded criteria. But common. No. So I was asking कि I mean sometimes it is required by our universities or by any specific journals or conference that you cite these sources or not. Maybe I think maybe they give these instructions, but it is not absolutely necessary that I mean sometimes we give policy documents and reports and even sometimes newspaper publication is a reference point even in our literature review or introduction and areas. So if it is not required by the journal or the university that we are working with, institute or affiliation, then we can give na Yeah, continually. yes. If it is the requirement of the journal or the institution or the conference that you are applying for, or you are trying to disseminate your research with, so you just can include that into your inclusion criteria. But my particular point is, you when you set the criteria, you can set the criteria as of your purpose or as of your focus of your study particularly, right? You can change it on the basis of the purpose of your study. It is not, what I'm saying is, should not only be the case that these are just common exclusion criteria, not absolute exclusion criteria. It is not absolute that Yeah. you always will exclude these things, but it is depending on the context or the purpose of your study. If your study requires these kind of
opinion based, kind of uh, writing pieces, or studies. Whatever your focus is, basically you decide the criteria on the basis of the focus of your study and the purpose of your study, right? Yeah. Yes, 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 you are right here. And if you're a publisher asks for certain criteria, you have to follow that criteria, because that is the only reason they will allow you to publish your Yeah. paper into that their journal, or whatever. Is there any authority on this criteria? I mean, any book or some, like we have APA and MLA, anything like that, any institution? Is there Yes, yes. authority on it? For medical sciences, there is this criteria. I'm just skipping its name in my mind. I will certainly share that with you people. But that is for medical sciences. I couldn't find out any for such social sciences, which you probably are from. For social sciences, I really cannot find any criteria, but I certainly will visit that. It is Prism or Prisma or something kind of, which is Prisma, used Prisma. in, yeah, Prisma. It is maybe in basically it is used in medical sciences, and you can use it for social sciences as well, but Yes. that particular criteria is for medical sciences. Hmm. Yeah. All right, so Thank I hope this is clear, right? Yes, sir, clear, sir. Great, great. Thank you, Muzammil. Thank you for your active participation. All right. Now, once we have the literature review, once we have the articles that we chose through the selection, inclusion and exclusion criteria, now we have these articles, and now these articles will be studied. Okay. So, reading these articles, uh, we only will find the gap of research gap in these articles. Now let's understand what research gap is. Research gap is basically the the area that is not researched, under researched, इसको हम कहते हैं, right? Under researched area in the research, the pool of researchers that research studies that we have. इन सबको स्टडीज को पढ़ के हमें कुछ आइडिया होता है कि यहाँ पे क्या गैप हो सकती है ना, राइट? एंड क्या ऐसी चीज़ है जिसको कम से कम जो है वो रिसर्च किया गया है, या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी जो थेरोटिकल ग्राउंडिंग है वो वीक है, राइट? और क्या ऐसी चीज़ है जो मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, तो वहाँ पे उस मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस कहाँ पे हैं, तो हम उनको किस तरीके से जो है वो उन लिमिटेशंस को जो है वो उन पे वर्क करके उनको फुलफिल कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट basically the literature gap provides us, right? That is what research literature give literature gap or research gap indicates. And then research gap, once we find out the research gap, now it is our originally research that we will fill the gap with, right? And iski jo significance hai, that obviously will increase, and we will this will be our scholarly contribution in the field particular which we are studying in, or which we are doing research in. Getting my point? So first we know how to find out research papers. Then once we know the way of finding research papers, now we set the criteria for including papers and excluding papers. Once we set that criteria, and we have the papers included in the pool of which are which follow or which meet the criteria that we produce or develop, then we will read these articles or research papers. Once we read these articles, we will find the research gap. Research gap is basically the under researched area in the literature, कि इस लिटरेचर के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको सबसे कम स्टडी किया गया है या स्टडी नहीं किया गया, क्या ऐसी चीज है जिसको मजीद स्टडी करने की जरूरत है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी
have, and we will see what kind of gaps there are in research obviously. तो उससे फिर भी आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, वंस वी हैव द गैप देन आवर रिसर्च, उस गैप को फिल करना will be originality, will be significance of our research and scholarly contribution in the field, in that particular field. Clear? Now let's discuss the types of literature gap. Literature gap can be can be theoretical gap, which is limited or outdated theory. It can be methodological gap, like there are the studies on particular subject or the title or the topic which are quantitative and there is a need for qualitative research, or maybe there are qualitative and quantitative but there needs to be the triangulation of the data, so we just go for mixed method research. So these are the theoretical gaps, right? Methodological gap भी हो सकता है उसके अंदर, और आउटडेटेड थ्योरी हो सकती है इसके अंदर, और ओवर रिलायंस ऑन वन मेथड, कि देर आर लॉट ऑफ स्टडीज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट where only one kind of research method is very predominantly used in the research. So we try to replicate that that study with the different research methods so that we can see whether this study, these results are authentic or not. Because always when we do a research, if the research is not replicable, then the research is not as worthy. Because the more replicable research is, the more times it can be replicated and it can be reproduced. And once the research is replicable, then it is necessary that the research should produce similar results. If there is over reliance on one method and we do the research, same subjects, same variables, but with different research method, then we can see okay, why there are, if the results are similar, then our first study was very authentic. If the results are contradicting, then there is need for testing again, whether there is which research is authentic, or which research should be reliable, right? So reliability of a research depends on the replicability of that particular research. And when anybody replicates that particular study, it should produce similar ideas or similar results, right? So these are different theoretical gaps. Then we have population gap, which where marginalized or ignored groups, where we can see whether the population, whether the certain segment in the population is being included in the research or not, whether if there are any population groups which are ignored in the research processes of any of researches, then we have some kind of contextual or geographical gap, like if the study has been done in USA and it is not done in Pakistan. Even in Pakistani context, we can say, for instance, the study is done in Punjab and there is a gap in geographical gap in Sindhi context or Balochi context, or Pashto Pakhtun context. So we can do that research as well, which is very, 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 kind of common practice in Pakistan, that we if someone does a research in Punjab and the other person does research in Sindh, and sometimes people do research in you know in one university, and we replicate that research in other university. So although there is this kind of leniency in replicating the studies, but obviously their results should match. The second is we should not emphasize on replicating the other studies. We always should produce new knowledge, some original idea in the research. That is the purpose of research, right? In Pakistan, basically, we always focus on geographical gap. We do not focus on
theoretical or methodological gap, or we usually rely overly on one method, right? So that's an other, population gap के अंदर हमारे पास जो geographical gap होता है। उसके बाद अंडर स्टडीड रीजन्स, अगेन वो भी geographical रीजन के अंदर उसके गैप के अंदर आता है कि भाई कुछ रीजन्स के अंदर जो स्टडीज़ हैं वो कम होती हैं। देन देर इज़ अ टेम्पोरल गैप. Temporal gap is related to time gap, which is the data is very old or the context has changed. So we now need to have another study on this particular context, or the studies maybe produce contradictory findings, which I discussed earlier, and then there are conflicting results requiring clarification. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो स्टडीज हमने की, एक में हमने एक मेथड यूज़ किया, दूसरी में दूसरा मेथड यूज़ किया। आप दोनों के रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट आए, डिफरेंट नहीं आए, रादर कन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक के ए रिजल्ट आ रहा है तो दूसरी का बी रिजल्ट आ रहा है, राइट? दोनों रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, तो अपोजिट हैं, डिफरेंट नहीं, रादर अपोजिट हैं। तो अपोजिट हैं तो फिर उनको देखेंगे कि भाई तीसरी स्टडी करेंगे, ताकि हम देख पाएँ कि वेदर विच स्टडी इज़ रेलेवेंट, विच रिजल्ट, विच स्टडी इज़ रिलायबल। सो दीज आर प्रीटी मच गैप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कि ये इस तरह के लिटरेचर के गैप्स होते हैं जिसके ऊपर आप फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड डिफरेंट गैप्स। अब आपको आइडिया हो गया कि कहाँ पे कौन सा गैप होता है और हम किस तरह के गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आपको आइडिया हो गया, अब अगर आपने कभी रिसर्च की है तो यू कैन सी कि आपने कौन सा जो है रिसर्च गैप को फिल किया था, या किस टाइप का रिसर्च गैप जो है आपने फिल किया था। यस मुजम्मिल। Sorry to interrupt here. Can I speak, sir? यस यस प्लीज। Okay. So, sir, thank you. You informed us so much regarding gap. One thing I had in mind कि sometimes हम क्या करते हैं कि जबरदस्ती हम कॉन्टेक्स्ट या किसी चीज में गैप बना देते हैं जो गैप रियलिस्टिक नहीं होता। उस जगह पे वो मेथडोलॉजी या उस जगह पे उसको लेके जाने का कोई बेसिस नहीं बनता। देयर इज नो फाउंडेशन फॉर दैट। और कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि इन चीजों को मर्ज करके इस फील्ड और इस फील्ड को मर्ज करके नया गैप बना देंगे, और फिर उस गैप को रियलिस्टिकली अचीव करने के लिए हमें कोई गाइडेंस या कोई आइडिया ही नहीं होता। We Exactly do not this. have any idea to Yes, achieve. yes, that's the dilemma of Pakistani research I was just discussing earlier. Like we just create the gap out of nowhere, and we do not have, kind of literary basis of that gap, because we do not read the literature now. We do not go for the studies. We do not go for the databases to find studies whether we really don't know whether this gap has been filled or not, right? Sometimes we find we read something around 10 to 15 or 20 studies, and we say that this is the game, right? And I personally believe that 10, 20 studies cannot decide what research gap is, because obviously there are a lot of researches being done in undergraduate level or even in master's level in Pakistani context, and there is this great competition among Pakistani scholars. So they always do research on such kind of gaps. So if you found the gap, there is very high chances that this research gap has already been, filled by some other person in your region. There are highly, chances of high chances of this happening, but we do not look for those things. We go for गूगल स्कॉलर पे बड़ी बात ये है कि कीवर्ड सर्च, SEO, आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज समथिंग very very important to understand, that there are a lot of research articles जो कि उस तरह से optimized नहीं होते keywords के ऊपर। तो वो रिसर्च अल्दो हुई भी होती है, बट गूगल स्कॉलर पे वो ऊपर नहीं आती, एंड वी ऑलवेज गो फॉर आवर फर्स्ट वेब पेज रिजल्ट्स, हम उसको ही देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, मतलब अगर आप रियलिस्टिकली देखें ना, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड हैव गॉन टू फिफ्थ पेज
और इवन थर्ड पेज ऑफ द गूगल स्कॉलर, जहाँ पे आप जा करके वहाँ से पेपर आर्टिकल डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं करते। क्यों? बिकॉज वी आर टू लेजी टू यू नो we are too lazy to switch pages, and we just take one page and then we just go for that and we study that, and whatever studies we find there, we just take them and we leave the Google Scholar without having in consideration. Like for instance, let me just give you an example ना, like इसको अगर मैं relevance पे करता हूँ, तो you can see there are about 18,800 results, right? And only few of them are on the first page, right? And others will be on second, and there are, more than 10 pages of the results. So we don't count this number. You know, there are a lot of papers. These papers are pretty much, and students come to me and say, "Sir, we couldn't find papers." भाई आपने second page देखा ही नहीं, third page देखा ही नहीं, तो आपको कैसे research papers मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, जाहिर है। आपको फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स मिले हैं, उसको उसके बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन बना लिया कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। यस मुजम्मिल। Yes, sir, exactly as you said, majority of Pakistani researchers for the first time we do not know that anything, and scholars are like AI and they are running on algorithm. These sort of things are on there. And जब हम देखते हैं when we are searching, that is giving us most recent results, which may not even be necessarily doable for us. या So something that many senior researchers have said, जैसे कि आप उसी रिसर्च की साइटेशन में जाएं जो पुरानी सी पुरानी रिसर्च है, उससे लेके अब रिसेंट स्टडी तक आगे पीछे घूमते रहे जब तक आपको मिले। या सी, लाइक इट्स हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है ना, कि व्हाट पीपल डू, जैसे ये फर्स्ट आर्टिकल हमें मिला है तो इसकी साइटेशंस हैं जैसे 256, राइट? तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देर देर आर वेरी हाई चांसेस कि हमारी जो रेलेवेंस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी पेपर कभी भी किसी भी आर्टिकल को साइट कर सकता है ना। सिंस पाकिस्तानियों की तो ये बहुत बड़ी ही एक प्रैक्टिस रही है कि रेलेवेंट हो ना हो, बस साइटेशन आनी चाहिए। कौन देखता है पेपर, कौन देखता है रेफरेंसेस को कि साइटेशन रेलेवेंट है कि नहीं है, बस जस्ट गिव द साइटेशन, राइट? हाँ सो एग्जैक्टली सर, सीनियर्स कभी कभी कहते हैं कि आप जो है फेक डेटा भी डाल दें, प्रिडिक्ट करके जुगाड़ लगा ले, हमें तो यकीन नहीं होता कि ये चलती कैसे है। मैंने दिस इज द स्टैंड। yeah, this is what, that's the reason that we do not produce scientists now. Our education our education system doesn't produce scientists, and we just produce kind of people with degrees, not people with skills, because we just go for the shortcuts, right? So that's the dilemma of Pakistani education system, and that's the reason that I started this institution. That my particular reason for uh, starting these sessions was to build awareness among youth. भाई देखो, रिसर्च ऐसे नहीं होती, दैट्स नॉट द purpose of research. We are misled. Our researchers, our supervisors, our teachers somehow have misled us to these practices, because they already have been doing these practices now, because of their promotions. And basically I believe that our Pakistani system, educationists and professors are very lazy. They do not want to spend time on reading, and they do not want to spend time on building their knowledge or their students knowledge. So वो बस शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ठीक है, इवन आपका पेपर आपने जब थीसिस कर रहे हैं या प्रपोजल कर रहे हैं, तो आपने उनको भेजा है तो वो जस्ट ओवरव्यू करके आपको दे देता है, राइट? और उसको डीपली पढ़ते ही नहीं है, बस बता देते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें ठीक करो, बाकी सब ठीक है, राइट? एंड वी थिंक कि भाई इसका तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो इसको समझ आ गई होगी, और यही चीज़ें हैं जो इसने बताई हैं, वही ठीक करनी है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी गो टू डिफेंस, वी देयर there are a lot of questions that we do not have answers to, and that create problem for us over there, right?
Okay, there is a message by Batul Fatma. Sir, most of our supervisors instruct us to just think about our area of interest, select the topic, go for research, and this session makes K think about finding gap will help us to construct our own research on a particular topic through literature review and finding gaps. Yes, exactly. Uh, that's why I मैंने अभी आपको फातिमा बताया कि हमारा जो पर्पस है ना रिसर्च का दैट इज नॉट टू जस्ट गिव अ पेपर इट इज टू produce some value, give something which is of some value, gives produce something which can have, you know, a certain value addition into our knowledge, into our, you know, field. Otherwise, what is the purpose of doing research? Nothing, just to fulfill the criteria of your bachelor's or master's or PhD degree, or, you know, fulfill the criteria of for promotions, right? So it takes hours to supervise like 5 students, and say and days if students are tens and twenties. My experience as a supervisor for undergrads. Yes, exactly. It is really time-taking process, and uh, I'm really apologetic to say this because it might hurt some people's feelings. That in Pakistan, even our PhD scholars, professors, maybe they are associate or assistant professors or full professors, they have tens of PhD scholars working under them, and there are 20s of MSc scholars working under them, and they just don't give time to these people, these students, and they are very worried, and they, you know, go for help here and there, and that's where our problem comes. Like हमारे जब researchers बाहर जाते हैं तो they face a lot of difficulty in research because obviously बाहर की जो institutions हैं they are very, you know, research oriented institutions. They focus on research because they believe that the true research provides value, and once value is provided, then there increases the knowledge, right? तो उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, we certainly face the consequences. Anyways, coming back to our topic, okay, it is really unnecessary to understand the research gap कि हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें रिसर्च गैप कहाँ से है और किस टाइप का गैप है, और उसको फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. These are basically the questions that we ask when we are reading literature review, right? When we are reading research papers. Then let's discuss the identifying researchable topic. Now, once we have the research gap over here, then we go to research topic. कि हमारा research topic क्या होना चाहिए? Now, the characteristics of strong research topics are it is clearly focused on some specific thing. It is a researchable within the time constraint with the time that we have. The researchable question is one which can be, you know, which can answer a particular research question in, you know, certain time, right? And then supported by existing literature. Obviously research researchable topic वो होता है जो टॉपिक करंट लिटरेचर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो हमने पढ़ा है, उसको भी सपोर्ट कर रहा हो, या जो लिटरेचर है वो उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहा हो. सपोर्ट कैसे करेगा? ऑब्वियसली अगर टॉपिक रिलेटेड टू गेप होगा तो उसको लिटरेचर सपोर्ट करेगा. ठीक हो गया जी. देन देयर इज रेलेवेंट टू द फील्ड एंड कॉन्टेक्स्ट. ऑब्वियसली इट शुड हैव be relevant to our field. Then it is personally motivating. Obviously you should choose the topic which you are really interested in. Otherwise you will get exhausted, and at times you will have no motivation, no urge to do that research, and you will be uninterested into that particular endeavor, and that's when things go wrong. So basically
There should be your personal motivation, there should be relevance with the field and context, it should be supported by the literature review or the existing literature that you have just reviewed, meaning it should have certain research, it should fill certain research gap, and it should be time limited, it should be researchable in certain time, and it should be specific. So basically it should be smart. Smart means specific, M for measurable, which is researchable in this context, and then A refers to achievable, which is again achievable, यानी time के ऊपर हम कर सकें, and then there is R, which is relevant to our field, and there is this T, which is time bound. So our research topic should be smart. Clear? And also a good topic is a compass, not a map. टॉपिक जो है ना वो कंपास होता है. कंपास इज समथिंग विच गिव्स यू डायरेक्शन. इट डज नॉट गिव यू द होल काइंड ऑफ everything over there, right? It does not, map always limit you, but compass always give you direction, राइट? मैप होगा ना आपके पास तो आप उसी मैप को फॉलो करेंगे, बट अगर आपके पास कंपास है ना तो यू फाइंड योर ओन वे थ्रू दैट. डायरेक्शन देख करके अपना खुद ही रास्ता बना देंगे. इफ यू somehow miss the route, or somehow you are distracted, तो आप उसको कंपास को देख के फिर दोबारा से आप अपनी स्मृति में आ जाते हैं, राइट? सो that's something. A good researchable topic is researchable topic is always your compass, not a map. It does not direct you, rather, sorry, it does not limit you, rather it gives you the direction. Clear? Now, per researchable question. Researchable question क्या है? पर्पस क्या होता है रिसर्च क्वेश्चन का? रिसर्च क्वेश्चन शुड ट्रांसलेट गैप्स इनटू इन्वेस्टिगेटेबल रिसर्च प्रॉब्लम एंड मेथोडोलॉजिकल डिसीजंस. रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो आपका जो गैप है उसको मेथोडोलॉजिकल डिसीजंस में ट्रांसलेट करता है. ठीक है जी. गैप को बनाएगा, गैप से वो इन्वेस्टिगेटेबल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेथोडोलॉजिकल डिसीजन प्रोवाइड करेगा कि आप किस मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है. If anybody has seen the videos of first workshop, or if anybody has attended that workshop, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च है ना, रिसर्च इज नॉट ओनली जस्ट अ रिसर्च पेपर, piece of paper or piece of writing. It is basically solving certain problem. सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड चाहिए. ठीक है. तो वो मेथड आपको जो है ना वो अपना रिसर्च क्वेश्चन बताता है. इट ऑल्सो गाइड द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, डेटा एनालिसिस प्रोसेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस. कि ये आपको अगेन गाइड करता है कि डेटा कलेक्शन कैसे होगी. सिंस आपको मेथड पता चलता है इससे, तो आपको डेटा कलेक्शन का भी मेथड पता चलता है, फिर आपको डेटा एनालिसिस का भी मेथड पता चलता है, फिर आपको डेटा इंटरप्रेट कैसे करना है उसका भी पता चलता है. What are the characteristics of strong research question? It is clear and specific. It is research method aligned, कि जो भी आपका research method है उसके साथ aligned होता है. Analytical rather descriptive होता है. ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, रादर ये एनालिटिकल होता है, एंड फिजिबल एंड इथिकल होता है. दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन. कि ये एक तो क्लियर एंड स्पेसिफिक होगा, दूसरा रिसर्च मेथड के साथ अलाइंड होगा, तीसरा जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो एनालिटिकल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए. तीसरा ये फिजिबल होना चाहिए. फिजिबल मींस डूएबल इन सर्टेन कंडीशंस, राइट? सर्टेन जो आपकी लिमिटेशंस हैं उनके अंदर अपने रिसोर्सेस को कंसीडर करते हो वो रिसर्च डूएबल हो, उसको हम फिजिबल कहते हैं, राइट? एग्जाम्पल से नीचे कि वीक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है. इज लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट? ठीक है जी. ये एक एग्जांपल है वीक रिसर्च क्वेश्चन का.
स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन का है, हाउ डज स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस क्वालिटी? Now you can see the difference, right? The research question, which is strong, is very specific because it focuses on the influence of research literature review training on the postgraduate thesis quality. ठीक है? So we have two, kind of variables over here. One variable is training, the other variable is thesis quality. ठीक है? Postgraduate thesis quality is the one variable. The other variable is structured literature review training. समझ रहे हैं? So एक training किस तरीके, now you see that is very specific, right? And we have clear idea that what we will be doing to answer this research question. क्लियर? सो आपका रिसर्च क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेथड के साथ अलाइंड होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन में कौन सी मेथडोलॉजी यूज होगी, ऑब्वियसली हाउ यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है जी। देन देन कम्स टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, व्हाट एग्जिस्ट्स, कंपैरेटिव होते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, रिलेशनल होते हैं, एसोसिएशंस जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ए की क्या एसोसिएशन है विद बी। ठीक है, ए को इंक्रीज करेंगे तो बी के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। these are the relationships, exploratory understanding the phenomena, these are different types of research questions जिसके बेसिस पे हम different मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कंपैरेटिव, रिलेशनल एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज हम यूज करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। देन comes the key takeaways of today's session। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, यहाँ पे लेके आते हैं एंड थोड़ा सा मजीद, फिर थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, तो आज के की टेकअवेज में से क्या है? डेटाबेस इंश्योर्स स्कॉलरली क्रेडिबिलिटी। ऑब्वियसली वी डिस्कस कि हम डेटाबेसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, और स्ट्रेटेजिक सर्चेस जो है वो किस तरीके से ओवरलोड को प्रिवेंट करती है, कि जितनी स्पेसिफिक हमारी स्ट्रेटजी होगी सर्चिंग की, उतने कम आर्टिकल्स हमें मिलेंगे और उतना कम ओवरलोड होगा या लोड होगा हमारा। ठीक है जी। एंड रिसर्च गैप कैसे ओरिजिनलिटी प्रोड्यूस करता है, और स्ट्रांग रिसर्च क्वेश्चन कैसे डिफाइन करता है स्ट्रांग रिसर्च को। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था, और मैंने आपको कहा था कि आप इसके ऊपर काम करके आएंगे, तो आई होप समवन वुड हैव वर्कड ऑन दैट। इफ एनीबडी वांट टू शेयर देयर थॉट्स ऑन दैट, प्लीज, यू आर वेलकम। एंड इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, you can also ask. So this is the discussion of today's session. I think I have bored you a lot, and I should take a break now, and you people should speak. So who want to give the response? Okay, yes, Zubair sir, please unmute yourself and share your opinion. Sir, the question was about meta-analysis, that it is taken as gold standard. Why? So my response that meta-analysis are referred to as gold standard in evidence-based research Mhm. because number one, they represent a collective wisdom as an outcome of several studies, systematic studies, instead of being an outcome of a single or sporadic study. B, uh, it's taken as gold standard on account of the multiple broad-based it's a foundation because it enables this sample size to be large, and therefore its reliability is increased on account of its large sample size. And C, on account of the large sample size, uh,
its margin of error is reduced and it is minimized while its credibility is maximized. That's B. yes, great, great. Continue, please. Yes. On account of exclusion and inclusion criteria, its clarity is enhanced. And E. Being statistical in nature, it is easily visualized and it is very user friendly. It becomes user friendly for the end user, particularly the policymakers for whom we target. Because they are always, the policymakers are always very short of time and they can ill afford to go through the long narratives or complicated narratives. So the visualization is a special effect of this meta-analysis, and it makes them very friendly. And lastly, I would say that is a one window operation and very affordable for senior most strata. So, sir, this is my response for that. Yes, 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 yes. Zubair Saab, you have really, really given the comprehensive response on this question, and these are basically, pretty much these are the reasons why meta-analysis is considered as a gold standard, because gold is something that all countries, or all the countries of the world has, you know associated currencies with, because gold is something which is always valuable. So this analogy is very suitable with meta-analysis in a way that it obviously provides inclusion and exclusion criteria. Because of that, the clarity is enhanced. Obviously, we have the idea that what kind of studies have been included in this meta analysis, right? uh, and we also have this, the meta-analysis have large amount of data being processed through it, and due to which obviously the margin of error is reduced, which creates which increases the reliability of the data, of the research. So obviously these are the things. And again, the one thing that you mentioned, that it is very user friendly because of the statistical nature of meta-analysis, which is very, which saves a lot of time for policymakers, because obviously always policymakers are always short of time, and they can see the data and they visualize it and they can understand it easily. So yeah, these are the things that are very, very, predominant in meta-analysis, and which make this meta-analysis as a gold standard. All right, we have a response from Dua Charger. Meta-analysis is seen as a gold standard because it combines results from different studies statistically that leads to precise and reliable results. Again, that's something that meta-analysis do. All right. It also resolves conflicting findings and provides comprehensive answers. Yes, exactly. That's what meta-analysis do, and that's why it is called gold standard. All right, guys. I'm really, really happy to see your responses, and thank you so much, Zubesa, for always being very proactively engaged into these sessions. And guys, I just want to make it announce it for all you people that Zubair Saab is the person who is with us since our first session. He joined the fundamentals of research. He also joined the SPSS essentials. He also joined smart research with smart PLS. And he's also part of this essentials of literature review session. So he is very, very, kind of loyal friend to us. He has always been part of our all workshops. And one good news that I would like to share with you people, that Zubair Saab is the person who published his first paper with the help of these sessions. And I would like Zubair Saab to give the testament to this as well. Zubair Saab, please share your experiences with us. Sir, thank you, sir. I had actually uh,
you know my background. I don't know. I am basically a science graduate, and I graduated in 87, 87. And then I worked for about 40 years in food industry. And having retired, I thought I should share my experience, accumulated experience in industry. I noted there's a lot of gap in academia and industry. So I wanted to share. So I had been affiliated with Karachi University in some or the other way when Dr. Rashda she made the food technology department at Karachi University. I was invited there in the university on the very first day. So I thought that probably I can at this in these advancing years I can still share some of my experience. But I started writing magazine articles, and I want to tell you that I wrote quite a few magazine articles, and they were published in some global magazines, and some of them were translated in 5 languages. But of course, there's difference in the magazine article and in academic writing. So I was not very actually very well aware of the academic writing, so I thought I should learn first. So I joined Karachi University distance learning, and I was lucky to have learned something, the basics of research from Dr. Wahid, Dr. Abdul Wahid of Karachi University, the head of department of economics department. And then I also learned something from Dr. Amin Hassan Saab. And in this way, learning is my passion. I believe in that learning that should continue right from birth till death. So, as we said, talbul ilmi faridatun ala kulli musliman wa muslima, or min al mahadi ila al lahad, right from the cradle to death. And I continue that. I really, I think it is as enjoyable as gardening, painting, and something. I enjoy learning. I think learning in itself is an art, and I love this art. And this is why I had been learning from you, sir. And I'm pleased to say that I learned, I applied, and then I published my first paper that was about the impact of some fats. I don't want to go into the scientific details of the things, but I made an orchid, and I also want to tell you, sir, that my second paper is now pending, and it is under review. And I hope, and as I shared that now I want to run something, a multidisciplinary on topic regarding the salt consumption that is related with the cardiovascular diseases as well in the direct or indirect way. So this is just a brief journey. I want to say something, sir, if you allow me, although I have taken long time, but if you It's allow okay. me, I want to say something. Yes, yes, please, please, please continue. Continue. And that is, sir, it is assumed that learning is more focused for the youth. And there is an important sector which is excluded, which I think should be included, and that sector is the more experienced people, those who have spent their life. But you know, in our society, experience is considered, or the advanced age, on account of advanced age, they may not be that physically active, but as far as their mental activity is concerned, as far as their experience is concerned, I think they should be utilized. Their experience should be included, not excluded, which unluckily is the case at the moment. So I think I have a strong passion to say that the we, the seniors, should be seen as persons, as experienced people, not as the fixture, not Yeah, as the yeah. furniture. Yeah. You're really really you're right exactly. It is the
opinion of teachers mostly and middle generations that we should focus on our youth, and we in the process we obviously exclude our senior citizens and our senior people, and we do not utilize their, since we exclude them, so we somehow miss the chance to learn from their experiences as we are learning from your experiences obviously. So it is on this point I really agree with you, but also one factor that I think that these young people or youngsters or youth are focused because people somehow think that these elderly people have lived their lives, and they have spent their time, they have contributed what they wanted to contribute or what they could have contributed, and now it's time for youth to contribute, and it is time to young people, young minds, young innovative minds to bring their innovative ideas into at front. So that's something I think, I believe that youth is focused for, but obviously in the process of doing that, we do that at the cost of losing the experience gained by these seniors, and I really agree with you on that point. And guys, I just wanted this interaction with Mr. Zubair, because he's my senior, he's my sir. I really sometimes get overwhelmed when Sir Zubair Saab calls me sir, because obviously he shows respect through that. Obviously, I understand that, but you people might have noticed that I always call him Zubair Saab, right? Because that is the way that we kind of give respect to our elders. And you people might have been thinking that who's Zubair Saab, and why is sir always call him Zubair Saab, you speak, or Zubair Saab, what is your opinion, or whatever. So I always address Sir Zubair Saab with Saab, because he's my senior. I learn a lot of things with from sir as well. So I just wanted you people to get motivation from Zubair Saab, that since he is retired, his passion for learning is motivation for all of us. We young people should learn to to be invested into learning the way Sir Zubair Saab is invested in learning, and we should take learning as an opportunity to to contribute in a meaningful way to the society, right? Zubair Saab, as he said, wanted to contribute uh, he wanted to share his experiences, lived experiences, where he found the gap between the academia and the industry, and he now wanted to inspire or give insights about what gap are there, what gaps there exist, and how can these gaps be filled. And he tried to write in magazines articles, but obviously these magazine articles does not have that kind of accessibility or access of reading. So he then turned to academic writing, and he has been with us for a long time now. And I really appreciate I really appreciate your efforts. I really appreciate everyone's efforts. And I just wanted to give you some motivation through Sir Zubair Saab's experience, that I really like you people to participate in this workshop, as I gave the instruction on the very first day yesterday in the morning. I shared the set of instructions, because the more you interact with me, the more I will be able to interact with you, and it would not look monotonous, because when one speaker is continuously speaking, it seems that it is monotonous, and people get bored, right? So I hope in tomorrow's, which is final session, you people would participate as much, and we will be having an interactive session tomorrow, inshallah.
So kind of you, sir. Thank you, sir. Thank you, Zubair sir. So kind of you, sir. Thank you. All right. So I hope it is clear to everyone. If anybody has any questions, you can just raise hand and ask questions. If not, just say sir, no sir, and we will be concluding today's session. Thank you, sir. All right. All right. Guys, since no questions, thank you, Dua. Thank you for your response. I really appreciate it. All right, guys. So let's call it night. Thank you so much for being with me. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.